Good morning, student. Welcomes. This is our third class of matrices. Last class we have discussed about equality of matrices and addition of matrices. Now, first we recall that equality of matrices. Equality of matrices means last class we discussed there आमे दीटा मैट्रिक्स को इक्वल केतरा करबा दीटा मैट्रिक्स जदी किसी कंडीशन सैटिस्फाई करियो कंडीशन कोन ना कंडीशन कोन फर्स्ट कंडीशन होची दे आर ऑफ सेम ऑर्डर इफ वी कंपेयर A and B matrix both are of same order. Second point is the corresponding elements are also same. Corresponding elements means first A matrix रा में first row first column element आवले सिटी में B matrix रा first row first column डालना हुआ both are equal. Similarly we can compare all the elements, then we say if all elements or corresponding elements are equal, then we say both matrices are equal. Let 1 2 3 4 5 6 this is of order 2 cross 3 and another matrix A B C D E F. This is also order 2 cross 3. If we compare those two matrices, order of both matrices are same. Now we compare corresponding element. If in matrix A n 2 3 4 5 are values, but in matrix B A B C D E F are variables. If we say A and B are same matrix, if we say A and B are same matrix, then A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3, D is equal to 4, E is equal to 5 and F is equal to 6. यदि A रा वैल्यू B रा वैल्यू C रा वैल्यू हम जेमति लिखिले सेमिति हबो ताहले हम एदिरे कोन कहबा इक्वल. If we write A is equal to B, it means two matrices are equal. If two matrices are not equal, we can write A is not equal to B. हमें दीटा मैट्रिक्स कंपेयर करिबा फर्स्ट दिके जदी ऑर्डर सेम हैला तो हमें कह देबान जे दीटा एक मैट्रिक्स सेम तापर हम कोन दिबा करस्पोंडिंग एलिमेंट को कंपेयर करिया जदी करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल हैला देन वी से A is equal to B. किंतु हमें जदी फर्स्ट कंपेयर करिया ऑर्डर जदी सेम होनी ताहले हमें सेकंड करस्पोंडिंग एलिमेंट को हमें कंपेयर करिया तो करने कोन में हमें सेठी करस्पोंडिंग एलिमेंट ही पाइबानी तेनु करे हमें सेठी लिखि दबा कोन फर्स्ट पॉइंट जदी ऑर्डर सेम हैला नै हमें लिखि दबा A is not equal to B. जदी ऑर्डर सेम हैला तापर जे हमें करस्पोंडिंग एलिमेंट कंपेयर करियो जदी एदिरा मैट्रिक्स रे 1 2 3 4 5 6 अछि माने करो एठी हमर थांदा 1 2 4 3 5 6 एटा देखो 1 2 3 4 5 6 अछि इडी अछि 1 2 4 3 5 6 देखो आर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम हला सेकंड रो सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेम हला ओ एठी हमरो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रे 3 अछि ए मैट्रिक्स रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रे 4 अछि तो हमर गोटे एलिमेंट जदी मिसिलानी corresponding all elements जदी इक्वल हबो ताला में दीटा मैट्रिक्स कोन कहया इक्वल कहया तो इठु हम कंपेयर करे दरकार देखो एडी सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम अछि सेकंड रो थर्ड कॉलम सेम अछि जदी मन करे एठी भी थाले हमर 3 3 तो हम भी आउ फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम भी समान होला किंतु हमें कहबानी A and B are equal, then we say A and B are not equal. Clear? Then addition of matrices. Addition or sum. We can say addition of two matrices or sum of two matrices. Addition of two matrices. If two matrices are said to be conformal for addition, data matrix यदि ऐड करिया पे यदि कंफर्म हैला कोन कंडीशन ना बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर जदी ऑर्डर सेम हेगला ताला हम दीटा मैट्रिक्स कोन करि परिया ऐड करबा ए गुटे मैट्रिक्स मानरो
2 क्रॉस 2 अछि 1 2 3 4 अछि मन बी गुटे मैट्रिक्स 4 5 6 7 अछि हमें जेतु दिना को ऐड करबा आर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 अछि माने आर क्रॉस 2 क्रॉस 2 होबो प्रे आर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होबो प्रे त माने आर ऑर्डर कोन लाबे सेम हैला जदी सेम हैला हमें दिना मैट्रिक्स कोन कर परबा हमें ऐड करि परिया दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन अब एडिशन कला पर हमें उठे जो मैट्रिक्स पाइबा दैट रिजल्टेंट मैट्रिक्स मस्ट बी ऑर्डर ऑफ इक्वल टू ए एंड बी ए बी रो ऑर्डर जहा थिबो जो दिना मैट्रिक्स को हम ऐड करछे से दिना ऑर्डर जहा थिबो हमें ऐड कला परे जो मैट्रिक्स ता पाइबा तार भी ऑर्डर सेम होबो ओके तो here this matrix of order 2 into 2 cross 2 and this is also order 2 cross 2 if we add to this matrix then we get a resultant matrix that is also order 2 cross 2 here the addition of two matrices is means corresponding element को हम कोन करिया ऐड करिया था ऐड कोन छै फर्स्ट 1 अछि 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कलम फर्स्ट कलम 4 अछि तो 1 को हमें 4 ऐड करिया वेरी सिंपल हम तो प्लस 2 रे बेटा करछे 2 क्लास पिला बेटा करि परिया कोन करियो एडिशन करियो ताको 1 रे 4 ऐड करिया तो से करि परिया नै तापर कोन करियो से एमती मैट्रिक्स को लिखि परियो नै 1 को 2 रे ऐड कर दो 4 को ऐड कर दो तापर 2 को 5 रे ऐड कर दो 2 plus 5 3 plus 6 3 plus 6 और 4 plus 7 तो 4 plus 7 this is very easy addition टा बहुत easy तो is equal to हम कौन पहले 1 plus 4 5 2 plus 7 2 plus 5 7 3 plus 6 9 4 plus 7 11 this is matrix this is the addition of two matrix and this also order 2 plus 2 as matrix these two matrix okay so now properties of addition now in generally matrix addition is commutative means a and b are conformed for addition a को b रे हम ऐड कर परिया जदी b को a भी ऐड कर परिया a को b रे ऐड करले और b को a रे ऐड करले both are going to be same that means matrix multiplication addition are commutative similarly matrix addition are also associative matrix addition are also associative that means a plus b plus c is equal to a plus b plus this is our associative property this property is holds good for addition of matrices therefore matrix addition obey associative property now existence of additive identity a रे हम गोटे null factor हमें sorry null matrix ऐड करिया r ऑर्डर जहा थियो r ऑर्डर 2 क्रॉस 5 अछि ने ये भी null matrix लिखिया तार भी ऑर्डर 2 क्रॉस 5 हो आ ए मिसला परे हम कोन पाइबा सेम a पाइबा और हम यदि जीरो मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स रे ऐड करिया सेम ऑर्डर थिबो ताले सी को कोन एस ए मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स ऐड करो बस जीरो मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स ऐड करो हम कोन पाइबा सेम मैट्रिक्स पाइबा देयरफॉर जीरो इज आवर additive identity okay then additive inverse additive inverse माने गोटे मैट्रिक्स हमें n ले हमें एथरे कोन ऐड करले हमें 0 पाइबे ए मैट्रिक्स हमें कोन ऐड करले 0 पाइबा आर नेगेटिव टा ठीक है नेगेटिव जब हम ऐड कर दो तो 0 पाइबा therefore a plus minus a is equal to 0 therefore a is the additive of a and also minus a is additive inverse of a and a is also additive inverse of minus a okay तो ये are additive inverse ये मध्य are additive inverse now cancellation law means a plus b is equal to a plus c यदि b मैट्रिक्स रे ऐड करछे c मैट्रिक्स रे ऐड करछे दिटा यदि सेम हला हम एक वे कैंसिल कर देले दिस इंप्रेस हम कोन पाइबा b is equal to c okay this implies b is equal to c हमें देखो यदि a को b रे ऐड करिया और c को मध्य b रे ऐड करिया नले हां a को b रे ऐड करिया और c को ऐड करिया हमें देखो बोथ साइड a b को a रे ऐड कराई छी b को c रे ऐड कराई छी हमें जे a रे को कैंसिल करबा तो हम कोन पाइबा
A is equal to C. This is known as right cancellation law. This is known as left cancellation law. This is known as right cancellation law. Okay. Now we will discuss about subtraction of matrix or difference of matrix. Subtraction of matrices or difference. हमें difference और subtraction matrix देखिए. जिमें हमें एडिशन कले ए सेम प्रोसेस हमें एठी भी डिफरेंस रे भी करिया बा सबट्रैक्शन रे भी करिया. हमें जते बेले दीटा मैट्रिक्स को ऐड करले कोन कंडीशन थिला ना दी बोथ आर हैव सेम ऑर्डर. सिमिति हमें तो सबट्रैक्शन करिबा केतले सबट्रैक्शन कर परिया ना दे आल्सो हैव सेम ऑर्डर. लेट A and B are of same order. दीटा ऑर्डर कोनला सेम हैला. हमें कोन करिया बे गोटा गोटे सबट्रैक्शन करिया. सबट्रैक्शन माने देखो हमें लिखले a - b आ लिखे b - a. a - b - a. तो जे हमें कोन कहबा लिखले रिटन एज a - b ये b - a. a - b मींस b टा को हमें कोन करिया a रो डिफरेंस करिया. आ इडी कोन करिया a टा को डिफरेंस करिया काई रो b रो. तो हमें बे डिफाइन करिया जदी मनरो a डिफरेंस b. Let A and B are of same order. Let A is equal to Aij of order m cross n. A order हम कौन ले m cross n ले and B is a matrix of order also m cross n. हमें कौन पे दीटा order m cross n बनबा ना हमें एबे कंफर्म करि परिबा जे गोटे मैट्रिक्स रो गोटे मैट्रिक्स डिफरेंस करि परिबा. जदि हमें B मैट्रिक्स को A रो डिफरेंस करिया द difference of matrix B from A is denoted by difference of B from A. B को हमें A रो डिफरेंस करिया त माने A written as A minus B. Okay, and defined as a matrix C where Cij is equal to also order m plus n. जो हमें मैट्रिक्स टा गोटे A टा को A मैट्रिक्स रो B मैट्रिक्स डिफरेंस कला पर हम मैट्रिक्स पाइले C मैट्रिक्स टा को मान हम लिखले C आ तार ऑर्डर मध्ये कोन हबो A of B मैट्रिक्स रो ऑर्डर सहित समान हबो. ओके, where Cij is equal to Aij minus Bij. Cij माने ith रो jth column C matrix रो ith रो jth column ये ला this subscript denotes rows and this columns. हमरा I टा कोन इंडिकेट करछे रो और j टा column. तो C matrix रो ith रो jth column रे हमें कोन लिखिबा ना A मैट्रिक्स रो ith रो jth column रो एलिमेंट नबा B मैट्रिक्स रो ith रो jth column रो एलिमेंट नबा ताइरो डिफरेंस टा लिखे हमें C मैट्रिक्स रो ith रो jth column. जदि फर्स्ट रो फर्स्ट column नबा B रो फर्स्ट column जदि डिफरेंस करियो C रो फर्स्ट column लिखियो. फॉर एग्जांपल let A is equal to हमें लगा 1 2 3 2 4. हर ऑर्डर कौन लिखले हमें कितना रो तीनटा रो दीटा कॉलम ऑर्डर इज 3 क्रॉस 2. एंड जदि हमें A रो B को डिफरेंस करिया बा B रो A को डिफरेंस करिया पे चाहबा ताले B रो ऑर्डर मध्ये कोन हबो 3 क्रॉस 2 हबो पडियो. तो पे B मैट्रिक्स टा को हमें लिखिबा माने रो 2 1 2 3 3
equal to b. आमे बे a रो b को डिफरेंस कर परिया कमे ना a रो ऑर्डर और b रो ऑर्डर सेम हला. We can define the difference a minus b and also b minus a. First time लिखा a minus b. A minus a difference b or a subtraction b or a minus b. You can say also a minus b. A matrix रो b matrix रो difference करिया. We can write a difference b. A difference b that is equal to a matrix हम कौन लिख ले 1 2 3 2 4 1. A matrix रो हमें b matrix टा को difference करिया. B matrix कौन लिख से 2 1 2 3 3 2. A रे हमें माइनस करिया माने corresponding element माइनस करिया. तो हमें 1 रो 2 माइनस करिया फर्स्ट कॉलम रो a रो माइनस करिया कोन फर्स्ट कॉलम b रो तो 1 minus 2 ताको हम को लिखिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखिया. दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम. ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस करिया. तो हमें लिखा कोडी ये फर्स्ट रो एटा फर्स्ट कॉलम एटा सेकंड कॉलम 2 minus 1. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हे गेला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ला अछि कि नै तेरे हम कोन सेकंड रो गसिबा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 अछि 3 रो कोन माइनस करिया -2 2 रो सिमिलरली 2 minus 3 4 minus 3 1 minus 2. Okay, this is equal to 1 minus 2 is equal to minus 1 2 minus 1 is equal to 1 3 minus 1 2 is equal to 1 2 minus 3 is equal to minus 1 4 minus 3 is equal to 1 1 minus 2 is equal to minus 1. This is our difference of a and b. That means a minus b is equal to and RB order में कौन पहले this is also order 3 cross 2. Okay, answer is 1 minus 2 1 minus 1 2 minus 1 1 3 minus 2 1 2 minus 3 minus 1 4 minus 3 1 1 minus 2 minus 1. This is also order 3 cross 2 as the order of A and B. Okay. In similar way, we can difference two matrices. Okay. Now, difference of two matrices can be written as a also sum of two matrices. A difference B is defined as also A plus minus B. A difference B लिखिबा जहाँ A plus negative of B हमें B matrix जानछे B matrix जानछे ताले हमें negative B लिखिबे हम तुमको कहछे negative B के लिखिया ना B matrix रा सब एलिमेंट हम को करिया -1 मल्टीप्लाई कर दो. तो हमें A difference B को भी हमें D matrix सम को लिख परिया that is A plus ताको माइनस करथिबो तारा नेगेटिव मैट्रिक्स ताको ऐड कर दो. ओके, properties of subtraction. Matrix subtraction of matrices. Subtraction of matrices. First, in generally, the difference is difference of matrices are not commutative. That means A minus B is not equal to B minus A. A minus B is not equal to B minus A. A और B में difference के लिए जहाँ पाएगा B रे difference कर ले तहाँ पाएगा. For example, 1 2 3 4. This is our matrix A. Let B is equal to 3 4 5 6. Okay. Here A is equal to 1 2 3 4. B is equal to 3 4 5 6.
A minus B is equal to 1 minus 3. 1 minus 3, that is equal to 1 minus 3, that is equal to minus 2. 2 minus 4, that is equal to minus 2. 3 minus 5, that is also minus 2. 4 minus 6, that is also minus 2. And B minus A is equal to B minus 1, this minus this, 3 minus 1, 2. 4 minus 2, 2. 5 minus 3, 2. 6 minus 4, 2. Okay, A minus B, minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. B minus A, 2, 2, 2, 2. Therefore, A minus B is not equal to B minus A. But here we observe A minus B is equal to minus of B minus A. Minus of B minus A. जदि हमें B minus A रे minus t multiply करबा B minus A रे कोन गले minus t multiply कर देले जदि multiply कर देले से हम कोन पाइ जे B minus A रे minus t multiply minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 पाइले तो same as A minus B. A minus B is equal to minus of B minus A. Okay. Now we have discussed multiplication of matrix. Of matrices. Multiplication of matrices. Multiplication of matrices are two types. Matrix multiplication are also two types. First one is multiplication of matrix by a scalar, and second one is multiplication of matrices. First one is multiplication of matrix by a scalar. That means आमे गोटे मैट्रिक्स को गोटे स्केलर रे मल्टीप्लाई करिया. स्केलर मींस एनी नंबर और एनी कांस्टेंट. गोटे नंबर स्केलर मींस नंबर. गोटे मैट्रिक्स रे गोटे मैट्रिक्स को गोटे नंबर रे मल्टीप्लाई करिया और नंबर गोटे मैट्रिक्स रे मल्टीप्लाई करिया. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर मींस गोटे मैट्रिक्स को आमे गोटे स्केलर रे मल्टीप्लाई करिया. तो कोन पाइबा आ केमति करिवा तो देखिया. तापर जे हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मींस हमें मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिया. ओके. फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर मींस हम कोन कहले ना गोटे मैट्रिक्स जा थिबो ताको हम कोन करिया गोटे स्केलर बा गोटे कांस्टेंट रे मल्टीप्लाई करिया. तो गोटे मैट्रिक्स को हम गोटे स्केलर बा नंबर जदी मल्टीप्लाई करिया तो हमें कोन पाइबा आ केमति ताको मल्टीप्लाई करिया. देखो गोटे नंबर देछि माने नंबर ता 3. ए गोटे एनी मैट्रिक्स माने 1 2 3 4. ए गोटे मैट्रिक्स दैट इज 1 2 3 4. आम माने करो ई हला हमर स्केलर दैट इज that scalar is let's say 3. If 3 into a हम गोटे स्केलर को करे मल्टीप्लाई करले मैट्रिक्स रे this is equal to हम जदी गोटे मैट्रिक्स से 3 मल्टीप्लाई करिया त माने तार तको हम कोन करबा केमे डिफाइन करिया ना ए मैट्रिक्स रो each एलिमेंट रे हम 3 मल्टीप्लाई करबा. Every element of matrix is multiplied by 3. Okay. हमें ए मैट्रिक्स जते एलिमेंट अछि सब जगह जो स्केलर मैट्रिक्स रे हमें जो स्केलर रे मल्टीप्लाई कर दियो कहिछि ताको हमें मल्टीप्लाई कर दो. इन दिस एग्जांपल मैट्रिक्स ता कोन अछि ना 1 2 3 4. हमें जो मैट्रिक्स रे एलिमेंट 1 2 3 4 अछि सब जगह एलिमेंट को हमें 3 रे मल्टीप्लाई दैट इज 3 into a, that is 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 and 3 into 4. This implies
3a is equal to 3, 6, 9. That is our 3. If a is equal to this, then 3a is equal to this. Okay? If 3a is equal to this, I am going to go 1 by 3 na multiply kare. 3a matrix ta दी अछि ताको हम कोन करिया 1 by 3 ना मल्टीप्लाई करिया जदि मल्टीप्लाई करिया 3 3 कैंसिल हो जाए a हिला ना तो देखो आयरन करिया सब जाको 1 by 3 रे मल्टीप्लाई करिया तो हम कोन पाए 3 3 ले 1 आइला 2 3 4 और हम सेम मैट्रिक्स टा पाइले ना therefore a is equal to this. Okay, now another example. Let a is equal to 5, 10, 25, 70. If a is equal to this, then this implies 2a is equal to, I am going to now 2 into 5, the direct extreme, 2 into 5 means 10, 2 into 10, 20, 2 into 25, 50, 2 into 70, 140. I mean, a matrix को 2 रे मल्टीप्लाई ले तो मैंने a रा सब every element is multiplied by 2. Therefore 5 into 2 10, 10 into 2 20, 25 into 2 50, 70 into 2 150. If we find a by 5 or 1 by 5 into a, हमें a matrix को 1 by 5 रे मल्टीप्लाई करिया और a matrix को जा ऐसे ताको 5 रे डिवाइड कर दो. Divide means multiplication by 1 by 5 into a, that is equal to 5 into 1 by 5, 10 into 1 by 5, 25 into 1 by 5, 70 into 1 by 5. This is equal to 1, 2, 5, that is 5 1 are 5, 40. This is our, if a is equal to this implies that is 1 by 5 into a or a by 5 or a by 5 is equal to 1 to 5, 14. This is the process a matrix multiplied by a scalar. But definition, अब definition को जो multiplication of a matrix, multiplication of matrix by a scalar means every element of matrix is multiplied by scalar. Let A be a matrix of order n cross n a I j of order m cross n. This implies alpha into a is equal to alpha into a I j of order m cross n. That is equal to, in this matrix how many rows? M rows and n columns. First a11, that is multiplied by alpha, alpha into a12, alpha into a1, alpha into a13, alpha into a1n, alpha into a21, alpha into a22, alpha into a23, a2n. Similarly way, alpha into m number of rows, a m1, alpha into a m2, alpha into a m3, alpha into a mn. This is our, if a is equal to a j of order m cross n, therefore alpha into a is equal to this. Properties of matrix multiplication by a scalar.
let A, B are of same order and alpha, beta are two scalars, then the following conditions are holds good. First one is alpha into A plus B. A matrix B matrix A गला पर हम alpha मल्टीप्लाई करिया जहाँ रिजल्ट पाइबा alpha into A alpha को A रे मल्टीप्लाई करिया alpha को B रे मल्टीप्लाई करिया प्लस करिया alpha into A plus B is equal to alpha A plus alpha B. Second property is alpha plus beta. Alpha plus beta. Theta is scalar. Alpha beta is scalar multiplied with matrix A. Alpha plus beta multiplied with A is equal to alpha into A plus beta into A. And the third property, alpha beta multiplied with matrix A. Alpha beta multiplied with matrix A is equal to alpha into beta multiplied with A is equal to beta into alpha beta. Okay. Now, fourth property is 1 into A. 1 into A matrix is equal to A and minus 1 into A matrix is equal to minus A. Okay. Here 1 and minus 1 are also scalar. Okay. These are the properties of a multiplication of matrix by a scalar. Now we go through matrix multiplication or multiplication of matrices. That is very important. Multiplication of matrices. Multiplication of matrices means we can multiply two or more matrices. This is very important. भल से यदि बुझो ना तो तुम किछि करि परिबने हैला तो एटा भल से बुझियो चेष्टा करिवो हैला तो देखो हम इन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन करले कोन करले ना दीटा मैट्रिक्स किछि कंडीशन सैटिस्फाई करले ना कंडीशन कोन बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर जदि दीटा मैट्रिक्स सेम ऑर्डर अछि हम कोन करले सेदिरा को ऐड किबा सब्ट्रैक्ट कर पाले इन द सेम वे एठी जदि हम दीटा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिवा we can multiply two matrices but we cannot multiply any two matrices. हम दीटा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिवा नला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर पारले कि हम एनी टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिया पय कहबा तो हमें कर परियने त माने देयर इज अ कंडीशन टू मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस रे किछि कंडीशन अछि जो कंडीशन यदि फॉलो करिवो माने से कंडीशन सैटिस्फाई करिवे मैट्रिक्स ताले से कोन करे मल्टीप्लाई करे तो माने मल्टीप्लिकेशन करिया पे हमर किछि कंडीशन अछि से कंडीशन दा फर्स्ट भल से सुनो मु कहूची तापर हम कोन मल्टीप्लाई करे केमते मल्टीप्लाई करे तापर जे ना कंडीशन कोन लेट कह दूची फर्स्ट देखो let A and B are two matrices let A and B are two matrices if they are conformal for product AB जदि A B दीटा मैट्रिक्स अछि A गोटे B गोटे मैट्रिक्स अछि हमें दीटा मैट्रिक्स रो हमें A को B सहित मल्टीप्लाई करिया A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स सहित मल्टीप्लाई करिया when they are conformal for multiplication एमने केते बेले मल्टीप्लाई होबा पय कन्फर्म हेबे जदि कन्फर्म हेले ताले मल्टीप्लाई कर परिया अदरवाइज वी कांट मल्टीप्लाई A with B ना कंडीशन कोन A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स हमें यदि दीटा को प्रोडक्ट करिवा तो ये हला प्री ये हला पोस्ट प्री फैक्टर ये हला पोस्ट फैक्टर और इट आल्सो नोन एज प्री मैट्रिक्स B is known as post matrix ए दीटा मैट्रिक्स रे देखो हमें ऑर्डर लिखला सब बळे
m क्रॉस n फर्स्ट टाइम रो होचे तापर हमें कॉलम को जाउचे किंतु मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कला बेले जदि हमें दुईटा मैट्रिक्स a को b को मल्टीप्लाई करिबा ना देखिबा नंबर ऑफ कॉलम a रो नंबर ऑफ कॉलम कंफ्यूज होबनी a रो कोन नंबर ऑफ कॉलम काउंट करिवो और b रो कोन करिवो नंबर ऑफ रोज a रो नाउ केतरा कॉलम अछि देखिबो b रो केतरा रो अछि देखिबो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A is equal to number of rows in matrix B are equal then A and B are conformable for multiplication okay otherwise we cannot multiply A with B देखो very important A को हमें B रे मल्टीप्लाई करछे माने A रो ऑर्डर m क्रॉस n B रो ऑर्डर p क्रॉस q A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिया A रो कोन लिखले m क्रॉस n B मैट्रिक्स रो ऑर्डर p क्रॉस वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा गोटे कंफ्यूजन होबने देखो A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करिबा कंडीशन कोन फर्स्ट टाइम कोन देखिया A को B रे मल्टीप्लाई यदि करिबा A रे जेतुरा कॉलम अछि केतरा कॉलम अछि n टा एडी B रे केतरा रो अछि p टा तो n रा और p रे वैल्यू समान होबा को पड़ो यदि समान हेले ताला हमें मल्टीप्लाई करि परिया दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपोर्टेंट बहुत पिला कंफ्यूजन हे होचंदे हले बहुत सिंपल माने करो a को b रे मल्टीप्लाई करिया a b माने छाड़ दो गोटा को गोटा मल्टीप्लाई करिया ने फर्स्ट जाको मल्टीप्लाई तो प्री कहबा सेकंड रे पोस्ट प्री रो नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट रो नंबर ऑफ रो जदी इक्वल हला ताले वी कैन मल्टीप्लाई a एंड b तो माने a मैट्रिक्स रो बुझिलो a मैट्रिक्स रो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू b मैट्रिक्स रो नंबर ऑफ रो जदी इक्वल हला ताले हमें प्रोडक्ट करबा तो माने इडी जदी a रो मैट्रिक्स रो ऑर्डर m क्रॉस n अछि b मैट्रिक्स रो p क्रॉस q अछि ताले को कंडीशन पे मल्टीप्लाई करिबा ना इफ n इज इक्वल टू p n इज इक्वल टू p m रो वैल्यू जहाले हमन किछ असुविधा नै q रो वैल्यू जहाले भी असुविधा नै कारण m माने कोन a रे जते रो थिले भी किछ असुविधा नै b रे जते कॉलम थिले भी किछ असुविधा नै किंतु a रो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू b रो नंबर ऑफ रो समान हले हमें a को b रे मल्टीप्लाई करि परिया कंफर्म हला देखिबो फर्स्ट जो मैट्रिक्स लिखा अछि तार केतरा कॉलम अछि गणिबे सेकंड जो सेतरा रो अछि ताले एक b रे मल्टीप्लाई कर परियो ओके अब मल्टीप्लाई कला पर हमें अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करछ माने हम कोन पाइबा आउट मैट्रिक्स पाइबा तो माने करो से मैट्रिक्स ता एक b रे हमें मल्टीप्लाई कर पाले आउट मैट्रिक्स पाले माने दैट इज c तो तार भी ऑर्डर किछु माने तार भी ऑर्डर थिबो एक b रे यदि कंफर्म हेले मल्टीप्लाई करले केतला मल्टीप्लाई रे आर कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन b इधर यदि मल्टीप्लाई करले हम आउट मैट्रिक्स पाइबा माने a रो ऑर्डर m क्रॉस n अछि a रो ऑर्डर m क्रॉस n अछि b रो तो आर नंबर ऑफ कॉलम n अछि माने आर नंबर ऑफ रो n रो पडियो b रो नला में मल्टीप्लाई करि परले तो आर यदि नंबर ऑफ कॉलम रो n रहला जेतरा कॉलम रो b मैट्रिक्स रे हला इधर को हम मैट्रिक्स दिरो मल्टीप्लाई करला पर देखो आर नंबर ऑफ कॉलम आर नंबर ऑफ रो समान गेला तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें करि परिया तापरे a रो कोन रहले रो रहला b रो कॉलम रहला जो मैट्रिक्स हमें पाइबा तार ऑर्डर कोन हबो m क्रॉस b दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके एबे देखो a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिया हम काहे के बारंबार कहउची दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर परिबा तो a मैट्रिक्स ऑर्डर 2 क्रॉस 3 अछि b मैट्रिक्स ऑर्डर 1 2 क्रॉस 3 अछि हमें एजरा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर परिबा नाही बिकॉज़ नंबर ऑफ कॉलम इन b is 3 and number of rows in b is 2 therefore 3 is not equal to 2 3 is not equal to 2 therefore we cannot define ab okay माने करो a रो ऑर्डर अछि a रो ऑर्डर माने करो 2 क्रॉस 3 b रो ऑर्डर अछि माने करो 3 क्रॉस 5 आर तीनटा रो रहला सॉरी आर तीनटा कॉलम रहला करो a मैट्रिक्स तीनटा कॉलम रहला b मैट्रिक्स तीनटा रो रहला तो 3 इज इक्वल टू 3 ना आर कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इज नंबर ऑफ रो समान हला हम एटी ab डिफाइन कर परिबा एटी हम कोन करिया ab डिफाइन करिया जति हम ba कथा चिंता करिया माने b को रे मल्टीप्लाई करि परिबा कि नाही देखो आमे जदी नंबर को नंबर रे मल्टीप्लाई करछे a को b रे मल्टीप्लाई करछे b को रे आल्सो मल्टीप्लाई करि परछे ना
A को B रे multiply कले A or any number, B any number. If A is multiplied by B, then B also multiplied with A. In number system, A into B and B into A both are defined and both are equal. A into B is equal to B into A. Okay. Now in matrix multiplication, देखो A और B रो A रो 2 cross 3 अछि, B रो 3 cross 5 अछि. आमे A को B को डिफाइन करले आ जो मैट्रिक्स टा पाइबा तार ऑर्डर कोन हबो A रो B रो कॉलम त माने 2 cross 5 पाइबे हला इटे देखो B को और A रा में मल्टीप्लाई कर परिएगी B माने B रो ऑर्डर कोन 3 cross 5 A रो ऑर्डर कोन 2 cross 3 एबे हमें B रो नंबर ऑफ कॉलम जदी B को A रे मल्टीप्लाई करछ माने एबे B रो केतरा कॉलम अछि A रो केतरा रो अछि कंपेयर करिया ओके B रो कॉलम अछि 5 टा A रो अछि 2 टा therefore 5 is not equal to 2 therefore we cannot define AB we cannot define the product BA B को हमें डिफाइन कर पारे माने B मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से तो डिफाइन कर पाएबा नाही देखो इने हमें A B रो ऑर्डर जानले A B को डिफाइन कर पाए A को B से तो मल्टीप्लाई करबा किंतु B को A से तो मल्टीप्लाई करने A B मैट्रिक्स डिफाइन हबो ता माने न जे B मध्ये डिफाइन हबो ओके तबे हमें जानले को कंडीशन रे मल्टीप्लाई करिया कोन कंडीशन थिले मल्टीप्लाई करि परिया किंतु तापर जो मल्टीप्लाई करि परिबा केमिति मल्टीप्लाई करिया बे देखिया ओके let A be a matrix of a order m cross n A matrix order m cross n आको हमरे मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करि परिया तो let n b be another matrix and b be let b is a matrix of order देखो A को B रे मल्टीप्लाई करिया पे चाहछे तेन करी A रे जत्तेटा कॉलम अछि A रे केटा कॉलम अछि n टा तेन करी r n टा रो न पड़ो कर B मैट्रिक्स रे n टा रो न पड़ो आ तमे नंबर ऑफ कॉलम जति न जानिया लेट्स से P A रे ऑर्डर हम कोन लिखले A मैट्रिक्स ऑर्डर m cross n B मैट्रिक्स ऑर्डर लिखले n cross P तो नंबर ऑफ कॉलम in matrix A is equal to number of rows in matrix B. Therefore, they are conformed for multiplication. Okay. If A and B are, this is the definition of a multiplication. If A by condition, definition or condition of a multiplication. If A and B are two matrices, they are conformable for multiplication that is we can define AB माने A को B रे मल्टीप्लाई करिबा if number of columns in A matrix is equal to number of rows in B matrix तो A को B रे मल्टीप्लाई करिबा ताले कंडीशन कोन A मैट्रिक्स जितरा रो थिबो B मैट्रिक्स सॉरी A मैट्रिक्स जितरा कॉलम थिबो B मैट्रिक्स जितरा रो थिबो दे आर कन्फर्म फॉर मल्टीप्लिकेशन एटी कोन हला A मैट्रिक्स को हमें लिख ले m cross n B मैट्रिक्स ऑर्डर लिख ले n cross p now the product of AB is denoted by AB or A dot B. Here A is known as P matrix or P factor and B is known as
post matrix or post factor. Okay, तो हमें AB को मल्टीप्लाई कला परे the product of AB is denoted by AB or A dot B. A is known as pre matrix and B is known as post matrix. The product of AB, A को B को मल्टीप्लाई कर ले, is a matrix C. A को B को मल्टीप्लाई करने C पहले, फिर C मैट्रिक्स रा ऑर्डर भी कौन होगा ना A रो B रो कॉलम रहेगा of order M cross B and C and the elements of or the element Cij is the sum of the product of corresponding element of ith row of A and jth column of a matrix B. So this point is very important. आमी कौन लिखले ना A B को जदि हमें कंफर्म हेले प्रोडक्ट करिया पे A B मैट्रिक्स रो ऑर्डर कोन होबो ना A रो रहइबो A रो कोन थिला M थिला और B रो कॉलम रहइबो B रो कॉलम B थिला तो C आई जदि लिखले तार C मैट्रिक्स ताको डिफाइन करले A को B को मल्टीप्लाई करला पर C मैट्रिक्स पहले जो C मैट्रिक्स लिखले कोन लिखले देखो ऑर्डर लिखले M क्रॉस B. ओके, तो ए मैट्रिक्स रो एलिमेंट का हमें केमते डिफाइन करिया Cij मैट्रिक्स C गुटे तो मैट्रिक्स तार एलिमेंट कोन Cij लिखुछ ना तो Cij लिखुछ Cij मींस ith row jth column of this matrix. ith row jth column this matrix हम केबिति पाइबा C मैट्रिक्स रो ith column jth column माने फर्स्ट row first column first row second column first row third column एमदि हम जो पाइबा एलिमेंट है से सब केमिति पाइबा ना देखो is the sum of the product of corresponding element of ith row and jth column. A matrix रो ith row रो एलिमेंट सहित B matrix रो jth column रो एलिमेंट को हमें प्रोडक्ट करिबा. हम देखिए केमति हमें ताको मैट्रिक्स फॉर्म रे प्रोडक्ट करिबा. Let matrix A is equal to Aij of order M cross N. It can be written as A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n, AM1, AM2, AM3, AM. These are matrices. And P is equal to Bij of order M cross N. That is equal to B11, B12, B13, B is the matrix N cross P. Our number of column का number of rows same करिए बरा तो B is the matrix of order N cross P. That is equal to B11, B12, B13, B1P. Here we written 1P. This is the nth column. Second B21, B22, B23, B2P. How many rows? N number of rows. So Bn1, Bn2, Bn3, Bn P. This is our P matrix. If we multiply this by this, if we multiply A with B, then we get matrix C. Then we get matrix A into B is equal to, let's see. So
Now here we product A matrix with B matrix. A matrix with B, we can write the matrix A with matrix B. A11, A12, dot, A1M, 1N, A121, A22, dot, A2N, A31, A32, dot, A3N, A M1, A M2, dot, A Mn. This is our A matrix. We will multiply A with B. This is our B. A matrix multiply with B matrix. If we get C. C is means this is our order M cross N. This is our order N cross P. N cross P. देखो हमें जो मैट्रिक्स C पाइबा हमारा C11, C12, C13, C14, dot, C1, C order ना वो. C is the matrix Cij of order M cross P. हमें A को B को मल्टीप्लाई कला पर इधर मल्टीप्लाई वाला हमें C मैट्रिक्स पहले C मैट्रिक्स रा हमें ऑर्डर कौन पाएगा ना A रा नंबर ऑफ रो is M और B रा नंबर ऑफ कॉलम that is P. तो C मैट्रिक्स रा ऑर्डर हमें A को B को मल्टीप्लाई कला पर हमें कौन पहले C जो मैट्रिक्स पहले तारा ऑर्डर ला M cross P. C M cross P रा हमारा एलिमेंट है C11, C12 डॉट C1 कितना कॉलम है P C1 P C21, C22, C23, C24, dot, C2P, C M1, C M2, C M3, dot, C M4, C MP. तो हमें जो A को B को इधर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डेटा पाइले तो इठो एलिमेंट कौन हबो ना C11 is the matrix product of the this is our position of first row first column. The first row of A multiplied with first column of B and the sum of the corresponding product of the element. First row first column. If we product first row of A with the first column of first row of A with the first column of B, that is A11 into B11 plus A12 into B21 plus A13 into B31, that is C11 can be written as C11 is equal to A11 into B11, then A12 into B21 plus A13 into B31, A13 into B31 plus dot. Last one is first order last column रखना A1n plus A1n into first column last order Bn1. C1 first row first column हमें A into B रा में कौन पाएगा तो C1 पहले C11 तक हमें केमती डिफाइन करेगा ना A मैट्रिक्स रा फर्स्ट रो रो B मैट्रिक्स रा फर्स्ट कॉलम जदे मल्टीप्लाई करिबा हमें AB मैट्रिक्स रा C11 पाएबा और C11 इज इक्वल टू A11 इनटू देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम रे मल्टीप्लाई करें A11 इनटू B11 A12 इनटू B21 A13 मल्टीप्लाई विद B31 डॉट A1n मल्टीप्लाई विद Bn1 हां तो इस जो हमें प्रोडक्ट कला पर से एलिमेंट जो हमें सम करें दैट इज अवर A multiplied with B. Okay, in generally A into B is equal to C. That is order of C is order of A is equal to M cross N, order of B is equal to N cross P, order of C is equal to M cross P. A row number of row, P row number of column. Okay. In generally
CIJ CIJ माने कोन ना ए मैट्रिक्स रो ith रो ए मैट्रिक्स रो ith रो माने A J1 ith रो माने I1 A I2 A I3 डॉट डॉट A I येला ए मैट्रिक्स रो कोन m क्रॉस एंड तो ith रो रे कोन रहबो A I1 A I2 A I3 डॉट डॉट A IN येला B मैट्रिक्स रो jth कॉलम ओके येला A मैट्रिक्स रो येला B मैट्रिक्स आरो ith रो को आरो jth कॉलम कोन थिबो ना B 1j B 2j B 3j येला फर्स्ट कॉलम तो ith कॉलम टा हम जदि लिखिबा तो कोन लिखिया A1j B2j B3j डॉट 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 B nj सेमिति आर कोन लिखिया ith रो ए मैट्रिक्स ith रो कोन लिखिया फर्स्ट रो का में A11 A12 डॉट 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 A1 लिखु ना रे ith रो लिखिया कोन AI1 AI2 AI3 डॉट डॉट AIN सिमिलरली B मैट्रिक्स रो फर्स्ट कॉलम कोन होचे B11 B21 B31 B41 डॉट डॉट B n1 सिमिति आरो jth कॉलम कोन लिखिया B1j B2j B3j B4j डॉट डॉट B nj आमे कोन करिया ना A मैट्रिक्स रो ith रो को B मैट्रिक्स रो jth कॉलम मल्टीप्लाई करिबा औ जो A B जो मल्टीप्लाई करथिबा तार AB मैट्रिक्स रो कोन ith रो jth कॉलम रो एलिमेंट लिखिया तो आमे कोन लिखिया देखो AI1 into B1j देखो AI1 into B1j तापर प्लस AI2 into B2j हम कोन कहले कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ ये लार कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट तापर एलिमेंट आइ गला तापर एलिमेंट आइ आसला तापर हम कोन आसला AI3 plus AI3 into B3 plus dot 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 आरो लास्ट एलिमेंट कोन लिखिया AIN multiply with the BNJ this is the general element or ith element of matrix C or product of AB को मल्टीप्लाई करला पर C जो मैट्रिक्स लिखिबा C मैट्रिक्स रो ith रो jth कॉलम एलिमेंट कोन लिखिबा ना ith रो A मैट्रिक्स रो ith रो एलिमेंट सहित B मैट्रिक्स रो jth कॉलम माने फर्स्ट कॉलम लिखिबा AB को प्रोडक्ट ले फर्स्ट कॉलम लिखिबा तो A मैट्रिक्स रो फर्स्ट रो को B मैट्रिक्स रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करी कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिबा तापर तार कोन रिया सम करिया सिंधे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके हमें जो AB मल्टीप्लाई कला पर हमें C मैट्रिक्स पाइले तारो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिखा तो कोन लिखतंदे ना फर्स्ट रो जो A11 सीडी कोन थांदा B12 आको आसे तो मल्टीप्लाई करिया आको तापर एलिमेंट B22 A12 into B22 तापर A13 into B32 तापर इन डॉट डॉट A11 को कोन करथंदे B n2 सहित मल्टीप्लाई करथंदे हला ये ला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इन एरिया में सब जगह एलिमेंट डिपेंड करे इन जनरली CIJ means ith रो jth कॉलम तबे केमति पाएबा AI1 into B1j AI2 into B2j plus AI3 into B3i plus dot 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 AIN into BNJ this can also denoted by देखो एठी हमें जनरेट बाय समेशन ऑफ ए बी सब अछि ना तो हमें ए बी लिख दबा देखो एठी 1 1 अछि 2 2 3 3 4 4 एंड अछि किंतु आई सबुठी आई अछि ए द फर्स्ट दिने द प्रोडक्ट ले फर्स्ट जो प्री फैक्टर रे सबुठी आई अछि ना ए जगह आई अछि तो हमें ए आई लिखियो बी रो सेकंड सबस्क्रिप्ट ता कोन अछि जे अछि तो एठी हमें जे लिखियो आओ ए रो सेकंड सबस्क्रिप्ट बी रो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट सबुठी कोन अछि
ये 1 1 समान ये 2 2 समान ये 3 3 समान ये n n समान होला तो आमे एठी जहा लिखुची एठी भी ताले हमर k लिखली k लिखले माने के डाला 1 to केता बदला n बनला दैट इज k is equal to 1 to n that is this can be written as summation of k is equal to 1 to n a I k into b k j that means a matrix ro a b matrix ro आमे यदि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करबा करस्पोंडिंग एलिमेंट इडी मारो चारटा एलिमेंट अछि इडी हमें चारटा इडी चारटा कॉलम रहला हम चारटा रो रहबो आको आसे त मल्टीप्लाई करिया 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 मल्टीप्लाई करके सम करके कोन लिखिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इडी रो फर्स्ट कॉलम लिखिया तापर करिया फर्स्ट रो आरो सेकंड कॉलम अछि तो एमते करस्पोंडिंग एलिमेंट को प्रोडक्ट करके सम करके एठी लिखिया एमते लिखले कि हमें कोन a * b मैट्रिक्स टा पाएगा हम देखो देखो एग्जांपल नेले आराम से बुझि पाइयो तमे टिकेटा कंफ्यूजन होतबो मतलब थ्योरी पार्ट टा टिके कंफ्यूजन तुम करबो हम जदी क्लियर रे बुझि गले ताने किछ असुविधा नै कि जदी गोटे प्रोडक्ट हम कर दवा आराम से क्लियर हो जाय देखो दैट a = 1 2 3 4 5 6 ए मैट्रिक्स ऑर्डर कोन लाय 2 क्रॉस 3 ला हमें एमटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिया तार केतरा आ तीनटा कॉलम अछि तार तीनटा रो रहय परे माने b = 2 1 4 हमर तीनटा रो रहला ना तमे जेतरा कॉलम में हमें रखि परिया मानरो आउटे कॉलम रखो 1 2 3 और कॉलम और ऑर्डर कोन लाय 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 हमें number of column of a is equal to number of rows in b हमें a को b रे मल्टीप्लाई कर बेरिया देखो थ्योरी पार्ट वेरी इंपोर्टेंट होचे हमें केमिति मल्टीप्लाई करिया देखो a को b रे हमें कंफर्म मल्टीप्लाई कर बेरिया और a भी डिफाइन कर बेरिया तो देखो एटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना यदि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम रे मल्टीप्लाई करिबा तो हमें a b मैट्रिक्स रो कोनटा पाबा फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट पाएगा तो देखो हमें फर्स्ट रे 1 को 2 से तो मल्टीप्लाई किया तो कोन लिखे 1 * 2 plus first 2 into 1 plus 2 into 1 plus 3 into 4 plus 3 into 4 तो हम पहले कोना फर्स्ट रो a रो फर्स्ट रो को b रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करले a b रो फर्स्ट कॉलम पाले ए सब जाको हमें मल्टीप्लाई ऐड करला परे गोटे ले जो तो एता अछि बोले तो टेंशन नै ए सब जाको जदी हमें मल्टीप्लाई करी ऐड करता ए गोटे वैल्यू जो तो ये गुण रहला ना ए बी प्रोडक्ट रे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तापर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जे तो 1 को हमें 1 सहित मल्टीप्लाई करिया 1 * 1 2 * 2 तार करस्पोंडिंग एलिमेंट आ परे 1 पर एडी 2 अछि एडी 1 पर 2 अछि त 2 को 2 को मल्टीप्लाई करिया प्लस 2 * 2 तापर 3 को 3 सहित मल्टीप्लाई प्लस 3 * 3 ये ला हमर कोन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एटा हमर फर्स्ट रो अछि ना दिस इज आवर फर्स्ट रो दिस इज आवर सेकंड कॉलम एटा फर्स्ट कॉलम एटा सेकंड कॉलम तापर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यदि थर्ड कॉलम थांदा तो हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करथांदे जेतु फर्स्ट रो थर्ड ए बी मैट्रिक्स रे थर्ड कॉलम नाही तेनु हम मल्टीप्लाई करिबानी तो ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट ला तापर हम जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम सेकंड रो ए मैट्रिक्स रो सेकंड रो सहित बी मैट्रिक्स रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके हम ए बी मैट्रिक्स रो कोन लिखिया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम रे तो दैट इज 4 * 2 plus 5 * 1 plus 6 * 4 that is our second row first column now second row second column similarly we can also multiply 4 with 1 4 * 1 plus 5 * 2 plus 5 * 2 plus 6 * 3 this is equal to 1 * 2 2 plus 2 * 1 2 plus 3 * 4 12 1 * 1 1 plus 4 plus 9 4 * 2 6 sorry 4 * 2 8 plus 5 * 1 5 plus 6 * 4 24 4 * 1 4 plus 5 * 2 10 plus 18 हमें जो नहीं थिले ए बी मैट्रिक्स रे ए रे केतरा रो थिला दीटा रो थिला बी रे केतरा कॉलम थिला दीटा कॉलम थिला हमें जो मल्टीप्लाई कला परे हमें कोन कोड और पाइबा ना नंबर ऑफ रोज of A and number of rows of B. This is equal to 2 * 2 plus 2 4 plus 12 16 5 plus 9 14 8 plus 5 13
plus 24 37 4 plus 10 12 sorry 14 plus 18 14 plus 18 32 okay this is the order 2 cross 2 देखो हमें a b को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करला परे a मैट्रिक्स रो कॉलम सहित b मैट्रिक्स रो रो जदी इक्वल थिबो ताले दे आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन कला पर जो मैट्रिक्स हमें पाइले a रो नंबर ऑफ रो और b रो नंबर ऑफ कॉलम हेगी से कोन हो ऑर्डर तार हो therefore this is our a and b multiplication of a with b okay next class go through details properties or some condition of a multiplication before this if a is equal to 1 2 3 4 b is equal to 1 2 3 4 5 6 and c is equal to 1 2 3 4 5 6 find the product of AB BA AC CA BC and CB if possible देखो ABC तीनटा मैट्रिक्स आला ABC तीनटा मैट्रिक्स रे A को B सहित मल्टीप्लाई कर पेरेगी देखो A रे दिरा कॉलम अछि B रे रो अछि A को B सहित हमें मल्टीप्लाई कर पेरे करला पर हमर कोन आसियो एटा देखो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर अछि एटा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर अछि आरो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर अछि तो हमें A को B सहित मल्टीप्लाई कर पेरिया B को A सहित B रे तीनटा कॉलम अछि A रे दिटा रो अछि आर कॉलम आर रो समान हबो आर तीनटा कॉलम आदि रो तो B ए डिफाइन कर पेरियानी AC A को C सहित मल्टीप्लाई कर पेरियेगी तो प्रोडक्ट A रे केतना कॉलम अछि दिटा B रे तीनटा सॉरी C रे तीनटा रो अछि तो AC मते डिफाइन हे पेरियनी C को A रे मल्टीप्लाई C को A रे मल्टीप्लाई कर पेरियेगी C रे माने कोन केतना कॉलम रहला दिटा A रे दिटा रो रहला C को A रे हमें मल्टीप्लाई कर परिबा सिमिलरली BC B को हमें C रे मल्टीप्लाई कर पेरियेगी B रे तीनटा कॉलम अछि A रे तीनटा रो अछि BC डिफाइन कर पेरिया CB C को B रे मल्टीप्लाई कर पेरियेगी C रे दिटा कॉलम अछि B रे दिटा रो अछि C को B रे मध्ये हमें मल्टीप्लाई कर पेरिया ठीक है ए सब मल्टीप्लाई करथो ए क्वेश्चन मन रखितो नेक्स्ट क्लास रे के केमती करछो हमें डिस्कशन करिया तापर हमें प्रॉपर्टीज और किसी कंडीशन देखिया ओके थैंक यू बाय।